Hello, Daku Maharaj. 105 crores. Dibbity dabbity dibbity. मैम आपकी डायरी दे दी। See, I have a huge fan following. So, मेरी डाकू महाराज तो 105 crores तो क्रॉस करना ही था उसको and that's not my fault कि कियारा की गेम चेंजर बर्बाद हो गई. So that's not my fault. So I have a huge following. तो वो तो हिट होना ही था मूवी को. So my fans they are from US, they're from America, they're from Las Vegas, they're from Middle East, UK, Venus, Mars, so many galaxies. So yeah, so many fans. So yeah. आप ही देखिए लाइक मेरी मूवी ब्लॉकबस्टर हुई है और मेरी मम्मी ने डायमंड स्टडेड रोलेक्स दी है. इसमें कोहिनूर भी है. आई एम द फर्स्ट वुमन जिसको मतलब कोहिनूर दिया गया है. एंड डाकू महाराज की सक्सेस के बाद और ये मेरे पापा ने ये अंगूठी दी है. आपको पता है, आपने कभी सुना है अंगूठी जिसमें वॉच हो? अब देखिए सब बोल रहे हैं कि she is the first outsider to enter 100 crore club in such a fast pace. Yeah, and my diamond studded Rolex and my ring which has watch, so I have to watch. देखिए मैं सिर्फ अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहती क्योंकि ये गलत होगा. फिल्म काफ़ी सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, जैसे कि मेरी एक्टिंग, मेरे एक्शन सीन. सोचिए कि मैंने एक जगह पे 15 लोगों से मैं लड़ रही हूँ और वो कंटिन्यूस वो सीन चल रहा है. सोचिए मैं अकेले 15 लोगों से लड़ रही हूँ. सोचिए. तो मैं सिर्फ सारा क्रेडिट अपने आप को नहीं देना चाहती बिकॉज पिक्चर हर चीज़ का मिश्रण होती है. गुड स्क्रिप्ट एंड माई एक्टिंग and yeah, Daku Maharaj ki success 105 crores. So, we cannot deny that I'm the first girl to enter 100 crore club, and yes, I'm the first girl. I'm the first girl to wear Kohinoor diamond studded Rolex and ring with a watch. No. The song is so beautifully choreographed. No. It's such a unique song. It is such a unique song. आप choreography देखिए. 15 crores लगे हैं उसको बनाने के लिए. And I always made sure कि मैं जो भी कपड़े पहनूं मैं उसमें ग्रेसफुल लगूं. मैं जो भी एक्सप्रेशन दूं मैं उसमें ग्रेसफुल लगूं. और what is there in this set? You see. Yeah. So no, don't think like that. No. Yes, I'm the first woman to be punched like this. Such a graceful song. See, you won't believe. आप believe नहीं करोगे. You won't believe. So my first offer, like I got that first offer for Sarkar Raj. Yes, with Amitabh Bachchan. But I was very clear from the start. I was very clear, like I want to be Miss Universe. Like I'm the first girl to win the Miss Universe 2 times. Miss Universe India. So no, I don't regret. But yes, I was the first option. I have worked with all top level वाले actors के साथ. So see, I've worked with all the top actors. So like I'm the first outsider to enter 100 crore club. So it's no regret. Like I'm there. And I am the first actor to work professional
Yes, I'm the first actor to work professional. I know this is coming. I'm all natural. I did nothing did to my skin, did nothing. I'm I'm natural. I come from nature. I am the nature. So I'm not like those. I'm very natural. Like, I'm natural. I'm natural. But I do have a huge collection of perfumes. Yeah, I don't know Italian, French. I do have lots of perfume. I love perfumes, and you would believe it. Right now, I'm wearing 10 perfumes. 10 perfumes. Yes. You can smell it, na? You can smell it. You want to smell it? Yeah? Yeah. Youngest girl to win Miss India Universe, and for two times, yeah. So I want to tell you this, I feel so good about myself. Like I'm so young. I'm still in Anda. So yeah. So I got invited in Israel. तो वहाँ से ना मुझे invitation आया. So वहाँ पे बहुत लोग आए थे and I felt so good at 27. मुझे जज की तरह बुलाया गया. Like मुझे वहाँ बुलाया गया ताकि मैं वहाँ पे जज करूँ लड़कियों को. Yes. जज. So वहाँ पे बहुत लोग थे and वहाँ के लोगों ने मतलब मुझे इतना ऑनर किया, किसी को नहीं किया, मुझे ऑनर किया. मतलब आई फील सो ऑनर्ड. नो पैलेस्टाइन. सो यहाँ मैं जज करने गई थी बिकॉज आई एम द यंगेस्ट जज एंड ऑनर हुआ मेरा. And I'm the youngest. I'm the youngest. Youngest what? And I'm the youngest listed in Forbes. And I'm the most followed person on social media. The rich list. Yes. It's true. No, go check it. It's true. And one more thing I forgot. How can I forget this? So, people call me pageant legend. People call me pageant legend. And मतलब सोचिए आपको ये लेगेसी आगे बढ़ानी है. Like, ये legacy. Paps? No. I never call Paps. Like when you have 3, 4, 10 cars and they come to know na, like no, they come to know your plate number, so they'll follow you everywhere. So no, I never call Paps. Hello. हाँ बाहर रुकने को बोलिए. So yeah, I'm not like others. I never call that. No. Language, foreign language. Yeah, I'm the first woman who can speak Tamil, Telugu, Kannada, and yeah, I can. You guess what I'm saying. Yeah, you tell me. So I'm very thankful to everyone, and. Obviously डाकू महाराज उसने मतलब डाकू महाराज ने 105 करोड़ का वो क्रॉस कर लिया. एंड सोचिए अगर वो तो सिर्फ तमिल में हुई थी, अगर और लैंग्वेज में होती तो सोचिए 500 करोड़. एंड yes, my mom gifted me this. My mom gifted me this diamond studded Kohinoor Rolex, and my dad. It's a gift. It's a gift. Yeah, it's a gift. Yeah, so yeah, I'm the first girl to enter 100 crore club, and yes, Daku Maharaj, dibri dabri dibri. Yeah.